वसीम रिजवी जो कि मुसलमानों के बीच और कौम मुस्लिम के दरमियान कुरान शरीफ की बेहुरमती, हमारे नबी की बेहुरमती करता हुआ नज़र आ रहा है। जितने भी इस बेहुरमती के सेक्शंस हैं उसे लगा करके उस वसीम रिजवी को कानूनी तौर पर सज़ा दी जाए। पब्लिक को संभालना, पब्लिक को कंट्रोल करना ज़िम्मेदारों के हाथ में बड़ा मुश्किल का मामला होता है। शहर बेलगाम की पब्लिक को सीरत कमेटी ज़िला बेलगाम और दीगर तंजीमों वालों ने बड़ी ही हिकमत के साथ रोक रखा है, और कोई ऐसा गैर कानूनी काम हो तो ज़िम्मेदार और डिपार्टमेंट हमसे कहते हैं, कोर्ट कचहरी वाले, कि आप कानून के दायरे में काम करो। हम तमाम पब्लिक को जो है रोक रखे हैं। हम चाहते हैं कि कानूनी तौर पर वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई हो, और त्रिपुरा के जितने भी जालिम और मुजरिम इंसान हैं उन सब पर जो है कानूनी कार्रवाई हो, ये हमारी अपील है। उसकी बुक बैन करें। और वो जो लिख रहा है, वो जो किताब लिख रहा है और जो बुक वो जो है शाया कर रहा है, उस बुक को जो है बाइंड करें, और फौरी तौर पर चीफ जस्टिस सर से भी हम सुप्रीम कोर्ट के गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि उस किताब को जो है बैन कर दें और वहीं पर उस फितने को जो है दबाएं, वरना फिर हिंदुस्तान के हालात बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगे। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸೀರತ್ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಬರ್ ಬಾಗವಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು DC ಅವರಿಗೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಸೀಮ್ ರಿಜ್ವಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಜಾ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವನ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ರಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಪೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂ ಬಂದಿಗೆಗೂ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ತಿರುಪುರದಲ್ಲಿ ಆದ ಮಿಸ್ಯೂಸಸ್ಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಜಮಾತೆ ಉಲ್ಮಿಯಾ ಅಹ್ಲೆ ಸುನ್ನತುಲ್ ಜಮಾತ್ ಬೆಳಗಾವಿ, ತಂಜೀಮ್ ಉಲ್ಮಾಯೆ ಅಹ್ಲೆ ಸುನ್ನತ್, ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಕಮಿಟಿ, ಅಶ್ರಫಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಗುಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಹ್ಲೆ ಸುನ್ನತ್, ಫೈಜಾನೆ ಬಾಸಿಬಾನ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸೀರತ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬಂದ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾನರೇಬಲ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Memorandum to Honorable President of India with regards to the continuous insults to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam of Islam, and also the Tirupura violence occurred against Muslims. Respected sir, we would like to request your kindly to apprise the Honorable President of India regarding the dreadful atmosphere being created in the country through selected individuals, using them to promote enmity between communities and resentment, creating fear in Muslims by continuously insulting the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam of Islam, peace be upon him. The recent book launched by Satan Wasim Rizvi has shocked the entire Muslim community, and in fact is a big black spot fault on mankind, as nobody in history has dared to insult any religious or political figure with such abusive language. Even after several FIRs and protests, the current government is least bothered and concerned about the wrongful acts done under the supervision of the police itself. And behind this, some terrorist-minded persons are working under banner of Hinduism, and hence we approach and appeal the highest authority in India to call upon the government to act immediately against this Satan. Secondly, they particularly target and attack against the Muslim minority community, and day by day lynching of Muslims, Dalits, Christians is growing rapidly, and individually as well as collectively, with the state police also taking active participation as seen in Delhi riots and in recent Tirupura violence. This is dangerous trend and will burn the secular fabric of the country beyond repair. Instead of taking action against the perpetrators of the violence, the state governments target human rights activists and Supreme Court lawyers, NGOs and other social organizations to silence them from uttering anything against the crime. In Tirupura, VHP carried out rallies in which anti-Muslim slogans were chanted and insulting remarks against our Holy Prophet ﷺ were made. The shops and houses of Muslims were attacked, and the women's modest were outraged and set fire particularly to madrasas and mosques, and also to our Holy Quran were discredited.
Wasim Rizvi, a resident of Lucknow and former chairman of the Shia Waqf Board, wrote a book by titled Muhammad and invited Narsimha Anand Saraswati to learn the book. And during the launch, they both have insulted the honor of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We hereby forward the following demands to you for immediate action. Immediate ban on BHP. Wasim Rizvi's book Muhammad must be banned and all copies to be confiscated, seized immediately. मोबाइल जरा से बैक से लगे सर इकडे ओके सर